Good morning, all of you. How are you all? I hope you are all well. Good. So, students, let's start today class. In today class, we discuss about new topics related to political science chapter, uh, class 6. Okay, students. So, can anyone recall what we did study in previous class? Yes, students. Can anyone recall what we did cover in previous class? Like as you can see, related to that particular pictures also. Uh, so what do you think? So like you can say that like in previous class we discussed about diversity, like diversity like helps to like communicate and like learn from other people of diverse races. We can say that ethnic origins, beliefs, and as well as social groups. So that known as diversity. So in previous class we learned about diversity as well as we like what does diversity add to our like lives. So ये चीज हमने पढ़ा and we also discuss like concept of Ladakh, okay, physical features of Ladakh and like advantage of Ladakh. So all these topics covered in previous class. So students, so in today class we discuss about that particular chapter related to that particular chapter, and in today class we discuss new topic related to that. Okay, students. So like first of all, like you have to observe these pictures and tell me what comes in your mind. So which type of map is over there? Yes, students. Which type of map is there? Yes, you can say that like this is a political map. Yes or no? Yes, very good, students. So like which you have to like locate Kerala in India map. Yes, students. You have to locate Kerala. Yes, very good, student. So this portion related to Kerala. Very good. Okay. So in today class, we discuss about Kerala. Okay. Concept of Kerala. So let's go through. Yes, students. So first of all, like we discuss about like Kerala. So like Kerala is a state, the southeast corner of India. As you can see, like जो हमारा साउथ पोर्शन यहाँ जो हमारा केरला सिचुएटेड है तो साउथ ईस्ट ओके जो हमारा सॉरी साउथ वेस्ट जो पोर्शन है हमारा इंडिया का यहाँ जो हमारा केरला सिचुएटेड है ठीक है तो लाइक केरला इज अ स्टेट we can say that like in the southwest corner of India and spices like there is so many spices available is there like spices like pepper and clove like cardamom grown here and made this region on attractive place or traders तो ये जो ट्रेड के लिए इनके लिए काफी ये प्लेस जो है वो अट्रैक्टिव है and then like third thing is like the uh, stall of like Christ like St. Thomas comes here nearly 2000 years ago and he is credited with the bring Christianity Christianity to India. तो ये जो आए थे पहले कह सकते हैं जो उनका नाम है लाइक द अपस्टॉल ऑफ क्रिस्ट एंड द एसटी थॉमस इन्होंने जो यहाँ इंट्रोड्यूस किया था जो क्रिश्चियनिटी नहीं है जो हमारा रिलीजन उसको ईसाई धर्म को जो है इन्होंने यहाँ लॉन्च किया था लाइक समथिंग लाइक अप्रोक्स 2000 years ago 2000 साल वर्ष पहले ओके एंड देन लाइक थर्ड थिंग इज द बोट रेस लाइक इज एन इम्पोर्टेंट सो यहाँ का कुछ अगर हम बातें करें लाइक बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइक ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला तो जब ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो लाइक द इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल ओके स्टूडेंट्स so this thing clear now so basically like this concept of Kerala and then like a little like detail of Kerala okay we also discuss and like all the features we also discuss so now move further so like students some
some like little concept also get Kerala, like Ibn like Batuta, who like traveled like here less than 700 years ago. Okay, wrote a like travelers in a which he described the lives of Muslim. Okay, जो इबान बतूता है वो उन्होंने जो ट्रेवल किया था और here like he like less than 700 years ago, and like he wrote like he describes lives of Muslims. जब इन्होंने अपना वो बुक लिखा तो उनमें जो उन्होंने मुस्लिम के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया. ओके, एंड देन लाइक इनको तो हम सभी जानते हैं, like the Vasco da Gama was like first traveler who found the sea route from Europe to India. इन्होंने जो है सी रूट इन्होंने पता लगाया था यूरोप से लेके इंडिया तक का. ठीक है, तो द वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट ट्रैवलर, ये थे. एंड देन लाइक पीपल इन केरला लाइक प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज like Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, and like Buddhism. So like all these like religions performed by Kerala people. So this is like an important concept about Kerala. So like we can say in Kerala all these like religions such as like Judaism as well as Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism. So all these like religions performed by Kerala people. Okay, student, this thing clear now? Yes, very good. So like we can move further and yes, students. Now, so like we have to like in Kerala, people used to like fishing and use a net called like Chinawala, which is looks like a Chinese fishing net. So वहाँ जो एक कह सकते हैं कि जो फिशिंग नेट यूज किया जाता है जो मछली फॉर कैचिंग फिश. So this is called like fish net is Chinawala. Okay, students. So basically like we can discuss. And in Kerala, people used to fishing and use a net called a Chinawala. You have to like remember this particular point, and like which is looks like a Chinese fishing net. जो कि Chinese fishing net जैसे कि पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो, तो ये Chinese fishing net की तरह दिखता है हमारा. And then utensils used by them for like frying is called the like China chatti, and it is like believed that the word Chin could have like come from China. तो ये जो बिलीव करते हैं जो चिन्ह वर्ड है ये जो है चाइना से आया है, डिराइव होके आया. तो लाइक यूटेंसिल्स यूज्ड बाय देम फॉर लाइक फ्राइंग, जो ये सब जो यूज करते हैं फ्राई करने के लिए, कॉल्ड द लाइक चिना चत्ती. एंड इट इज लाइक बिलीव दैट द वर्ड चिन्ना like could have come from like China. Okay, students, this thing clear now? So now like third thing is like because of like fertile land and climate are like suited the growing rice, and are like majority of people here eat rice, fish and vegetables. तो यहाँ का जो एक कह सकते हैं कि जो भौगोलिक संरचना है, फिर like we can say that like geographical structures good for like rice कह सकते हैं कि राइस क्रॉप, एंड एज वेल एज लाइक अगर हम बात करें कि जो यहाँ का जो जमीन है वो भी काफी फर्टाइल है. So that's why the like people like like suitable climate, because of suitable climate and like suited that's why growing rice though in a very large quantity rice, and like we also discuss like majority of people here eat rice. तो ज्यादातर लोग जो है यहाँ खाने में वो चावल पसंद करते हैं, एंड लाइक फिश एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज पीपल आल्सो लाइक फिश, जो मछली और फिर हम कह सकते हैं जो सब्जी है. So all these like by Kerala people. So this is all about concept of Kerala. We can like we can also discuss in the Kerala people used to like fishing and use a net called, जैसे कि हमने डिस्कस किया जिस नेट को हम बोलते हैं चिन्ना वाला, which is looks like a Chinese fishing net, जो कि एक चाइना की एक जो मछली का जो जाल होता है उस तरह दिखता है. और देन लाइक यूटेंसिल यूज्ड बाय देम, जो यूटेंसिल इनके द्वारा जो यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं चीना चट्टी. एंड इट इज द लाइक उनका जो बिलीव है लाइक उनका मानना ये है कि इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीना वुड लाइक कुड हैव कम फ्रॉम द चाइना, वो चाइना से आया. ओके, एंड देन लाइक इनके जो क्लाइमेट के बारे में बताया गया, एंड देन लाइक दे मोस्टली पीपल दे प्रोड्यूस राइस क्रॉप, एंड they also like eat rice, fish and vegetables.
Okay, student. So this concept clear now? Yes, very good. So now we can move further. Yes. Yes, very good. So students, like one question for you. Question is related to like geographical concepts. So you have to like describe your state geographical features in the context of केरला. जैसे कि अभी हमने केरला का geographical features पढ़ा, उनके बारे में जाना. तो ऐसे लाइक जो आपके भी बताइए जो कि आप स्टेट में आप बिलोंग करते हो जिस स्टेट से, उसका आपको लाइक बताना है, डिस्क्राइब करना उसके कॉन्टेक्स्ट. लाइक आई एम फ्रॉम बिहार, तो बेसिकली आई लाइक we can say that like I like Bihar, like Hindi pronunciation, like is a state in eastern India, and it is the like third largest state by population and like 12th largest by territory. Within an area of like we can say that 94,163 kilometers square, and like Bihar like borders अगर हम बात करें इनकी जो, तो like वो उत्तर प्रदेश and like it's west Nepal to the north and the northern part of West Bengal to the east, and with the Jharkhand. Okay, students, to the south. The Bihar like plains is split by the river. That important rivers is Ganga. Okay, and which flows from west to east. Bihar is also the world fourth most population, like a populous sustainable entity. So like this is a physical features, and we can say also so that the like Bihar have like a fertile like land, because like all the like plains like Ganga plains is having that. So that अगर हम बात करें तो यहाँ काफी लैंड फर्टाइल होता है, और यहाँ जो खेती जो हम कहते हैं कि जो मोस्टली पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. So that, so all these are all about the art concept. So you have to like describe your state on your state. Okay, student. Geographical features, जैसे हमने कोई स्टेट के बारे में पढ़ते हैं like concept of Kerala, तो like basis of that you have to like describe your state. Okay, physical features. Okay, so very good, students. Like move further. So some question for you, you have to like answer this particular question. First question is like the utensil used for frying chinna wala. Like अभी हमने discuss किया, we have discussed in previous slide. So that known as fry pan, chinna chatti, both A and B, and then none of these. Like what do you think, students? What is correct answer? Yes, you have to like tick the correct answer, or you have to like submit your response. Yes, students, very good. So like this correct answer is chinna chatti. So chinna chatti, utensil used for frying chinna wala. Okay. And then my second question is, the dash is an important part of the Onam festivals celebrated in Kerala. So we also discussed in previous slide. So what is your answer? Yes, students. So like we can say that like boat racing is an important part of the Onam festival celebrated in India. Okay, very good, student. Very good. So now we can move further. So like अभी जो हमने दो के बारे में पढ़ा, like we have to like discuss about concept of जैसे हमने previous class में पढ़ा था, like concept of Kerala, as we as well as we discuss about like concept of like Ladakh. So in this particular module, like we discuss about Ladakh and as well as Kerala. Okay, students. So basically like we discuss first of all we discuss about like Ladakh, and then we discuss about Kerala. तो जैसे कि अगर हमने वैसे भी देखा है, उनके बारे में पढ़ा भी है, तो लाइक अगर हम बात करें जैसे हम उसकी केरला की, तो लाइक बेसिकली Ladakh is like Ladakh is a social desert situated eastern side of the Jammu Kashmir. Okay, student, of the Jammu Kashmir, and and then we can also say that like less vegetables. Okay, तो जो लोकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल जो लद्दाख का इज अ कोल्ड डेजर्ट के नाम से सिचुएटेड ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ इसका सिचुएटेड लोकेशन है. एंड देन वी आल्सो सेड दैट जो लेस वेजिटेशन ड्यू टू लैंड कवर्ड विद स्नो इन लार्ज पार्ट ऑफ एरिया. जैसे हमने देखा था कि वहाँ जो स्नो के द्वारा लैंड कवर्ड होता है, और जो वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है बहुत कम है बिकॉज ऑफ लाइक क्लाइमेटिक चेंज.
तो इसकी वजह से हमने देखा था। एंड देन थर्ड थिंग इज लाइक शिप कीपिंग, पाशमाना पाशमीना शॉल इज वूवन इन कश्मीर। ओके, तो शिप जो उसका कौन कौन से वो पालते हैं, लाइक पाशमाना शॉल इन द वूवन इन कश्मीर, तो ये सब चीज उनका जो एक पशुपालन था। एंड देन लाइक वी ऑल्सो लाइक फूड, लाइक वो कौन से लाइक पसंद करते हैं, लाइक मीट एंड मिल्क, जो कि हम देख सकते हैं चीज एंड बटर, तो दे ऑल्सो लाइक फूड। एंड फोर्थ थिंग इज लाइक मुस्लिम पॉपुलेशन दिस देयर 400 years बिफोर। तो यहाँ जो पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम जो पॉपुलेशन है इनके बारे में, जो उस रिलीजन के बारे में, वो 4 साल पहले जो है इनका यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, जो परिचय हुआ था। एंड देन लाइक लास्ट थिंग इज लाइक केशर सागा इज सन बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। तो और इसमें जो केशर सागा इज सन, तो मुस्लिम और बुद्धिस्ट के बारे में भी यहाँ बताया गया है। एंड देन लाइक we can then after we discuss about Kerala concept. So Kerala is situated in the southwest corner of India, ठीक है। ये कहाँ सबसे ऊपर है, लद्दाख, जो और ये सबसे नीचे जो हमारा पोर्शन है साउथ वेस्ट इंडिया का पोर्शन, जो केरला। ओके स्टूडेंट्स, so like these like difference between Ladakh concept and Kerala concept. And then we discuss about like fertile land and abundant rainfall have like resulted in the rice cultivation. तो यहाँ जो fertile land है और जो है बारिश भी हम कह सकते हैं कि उस हिसाब से होती है, और तो उसका जो रिजल्ट है वहाँ जो राइस कल्टीवेशन है वो काफी मात्रा में देखने को मिलता है। एंड देन स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, लाइक कार्डमोम्स आर ऑन दिस हिल्स। ओके, तो इस हिसाब से जो यहाँ के स्पाइसेस के बारे में बताया गया है, दिस इम्पोर्टेंट्स। एंड लाइक चीना चट्टी आर ऑल्सो पॉपुलर फॉर फ्राइंग मेजर फूड, ठीक है, लाइक राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। तो इसके बारे में बताया गया, जो मटेरियल्स जो यूटेंसिल यूज होता है वहाँ। एंड देन लाइक इबन एंड बतूता ट्रेवल्ड, जो फॉरेनर बतूता के बारे में बताया जाए, जो इबन बतूता ट्रेवल 700 years ago, अकॉर्डिंग टू हिम मुस्लिम कम्युनिटी वाज रिस्पेक्टेड। और वही हिसाब से जो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया। एंड देन लाइक डिफरेंट रिलीजन्स आर फॉलोड, लाइक जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। इसके बाद जो है वहाँ डिफरेंट सारे रिलीजन्स भी फॉलो करने लगे, जो केरला में जो हम कह सकते हैं, जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म, एंड देन हिंदू धर्म, तो ऑल दिस लाइक religion. Okay student, so now I hope you clear now concept of about concept of Ladakh as well as concept of like Kerala. Yes students, yes or no? Yes, very good. So now we have to move in further detail. So share your like students, share your experience if you learned something new from the diversity. जैसे हमने अभी दो कॉन्टेक्स्ट में भी देखा, दो उनके बारे में देखा, लाइक कि हमने जैसे कि अगर बात करें कि डाइवर्सिटी में, तो लाइक कि दो प्लेसेस का देखा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण, लाइक वी नो दैट लाइक वी, जैसे कि हमने वी नो दैट लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन, वी आल्सो नो दैट लाइक ड्रेसिंग सेंस ओवर देयर पीपल, एंड देन हर चीज जो हम उनके बारे में जान। तो जैसे कि आपको क्या लगता है लाइक कि जो शेयर योर एक्सपीरियंस इफ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम डाइवर्सिटी, तो आप डाइवर्सिटी से हम क्या सीखते हैं एज ए स्टूडेंट, एज अ लाइक कम्युनिटी, या एज अ लाइक पर्सन, तो हम क्या सीखते हैं लाइक, तो हम जब अगर कहें स्टूडेंट गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेसन एंड लाइक लेसन ऑफ लाइक एंड पीपल, तो डाइवर्सिटी से हम बहुत कुछ सीखते हैं व्हेन वर्किंग एंड लर्निंग विद लाइक पीपल फ्रॉम अ variety of backgrounds. Okay, so we can say that, and cultures, and like we can present in the classroom, students gain a like more comprehensive understanding of the subjects as well as matter. It also teaches students how to use their own like strength and points of view to like contribute in a diverse working environment. So like we can also know that from this diversity and learn from diversity. So I hope clear now. Yes, very good student. So this is one question for you. You have to like respond this particular question. So question is like Kerala and Ladakh is just similar in dash nature. So you have to like answer that. First option is both religions were influenced by Chinese and Arab traders. And then second, like both religions were produce of Pashimana, and then both religions having same climate. So which one is correct answer? Yes, very good student. So first is correct answer. Like you have to like both religions were influenced by Chinese and Arab
traders. Okay, not both religions having same climate, and not both religions were produced of pashmin. Okay, so they are different climate, different उसके nature है, परिवेश है, वहाँ का रहन सहन भी अलग. Okay, students, very good. So now, like you have to observe like this particular pictures and tell me what comes in your mind. Yes, students, you have to observe these particular pictures and tell me what comes in your mind. Like you have to like these different like religions in the India, but like unity is there. Okay, so we can say that कि डिफरेंट रिलीजन्स होने के बाद भी, डिफरेंट एक बिलीफ्स होने के बाद भी जो इंडिया में एक यूनिटी है, हम सभी को एक तरह मानते हैं ना. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो कहता है कि सभी बराबर. ओके, वी हैव ऑल इक्वल. ओके स्टूडेंट, सो लाइक गुड ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, वेरी गुड. So in this last module, like we discuss about like unity in diversity. So basically this concept discussed in particular module. So unity in diversity. So first of all हम बात कर लेते हैं कि जो concept होता क्या है ये. तो like अगर हम बात करें the term of unity in diversity was first coined by जवाहरलाल नेहरू. किनके द्वारा ये बताया गया था? जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया था. तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? मैं अगर आपसे पूछूं तो यस स्टूडेंट्स, तो ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे. यस, वेरी गुड स्टूडेंट. सो नेहरू like coined this term because diversity proved to be the strength for our country. तो जो नेहरू जी थे, जो चाचा नेहरू थे, उन्होंने जो ये बात टर्म जो पॉइंट किया था, बिकॉज लाइक डाइवर्सिटी प्रूव टू द स्ट्रेंथ फॉर आवर कंट्री. डिफरेंट डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट रिलीजन होने के बाद जो एक एकजुटता है, जो यूनिटी है, वो हमारे देश की जो है ये मजबूती है, यह स्तंभ है. उनका कहना ये था. ओके, दिस इज अ पिलर ऑफ आवर कंट्री. ओके, डाइवर्सिटी. सो नेहरू दैट लाइक थिंक दैट पर्टिकुलर एंड देन उन्होंने ये मानना था कि इंडिया नेशनल एंथम, जो इंडिया का नेशनल एंथम था, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. किनके द्वारा कंपोज किया गया था नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था. इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया. वहाँ जो जैसे आप नेशनल एंथम होता है तो आप सुनते होंगे, तो उसमें भी डिफरेंट डाइवर्सिटी को भी बताया गया है कि नेशनल जो हमारा देश है वो कौन से कहाँ का फीचर्स है, कहाँ कौन सी नदियां बहती है, लोग कहाँ के कौन से हैं. ठीक है, पंजाब, मराठा, अलग अलग मतलब रिलीजन्स के भी, बिलीफ के भी होने के बाद भी हम जो हैं वो नेशनल एंथम गा रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑल इंडियन, वी हैव लाइक यूनिटी टुगेदर. जो हम लोग के बीच जो है एकजुटता है, समानता है. ओके, तो इसके बारे में उन्होंने बताया था. तो दैट्स कंसेप्ट लाइक रिलेटेड टू आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके स्टूडेंट, क्लियर नाउ? यस, वेरी गुड. So now we have to move further. Like yes, so like the song, like we can say the song was like bung after the like Jallianwala Bagh, like the massacre in the Amritsar, which like British general gave order to open fire on a large group of people. जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो काफी दुखद घटना जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा, जो जनरल डायर द्वारा ये आदेश था, तो उसके द्वारा किया था. लेकिन फिर भी जो उसमें एकजुटता थी, लोग सारे एकजुट होकर जो अपना देश को स्वतंत्र कराने के लिए वो अपनी एक्टिविटी कर रहे थे. पर लोगों का वहाँ जो कह सकते हैं कि काफी एक बहुत दुखद घटना जो आज भी हमारे इसमें, जो हम कह सकते हैं कि हमारी स्मृति में है. तो लाइक सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country with a rich tradition of respect of our diversity. वो चीज हमें बताती है कि वहाँ इतने सारे समुदाय के लोग इकट्ठे थे उस पार्क में, और जलियांवाला बाग जब, फिर भी जो लोग एक स्वतंत्रता के लिए, एक फ्रीडम के लिए सभी एकजुट होकर लड़ रहे थे, बिकॉज वी आर इंडियन, वी हैव यूनिटी. सो हमारे में एकजुटता है, हमारे में वो समानता है, हम सभी एक दूसरे को, हमारे में जो भाईचारा है, लाइक वी कैन से दैट. सो लाइक कंट्री रिच ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट. So like we all respect to each other, we all respect to each other like tradition. Okay, so as like our Indian flag used a symbol of protest against the British by people everywhere. तो हम सभी जो है एक ही जो हमारा झंडा या फिर एक ही फ्लैग जो हमारा इंडिया का है, वो हम सभी यूज करते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके विरोध करने के लिए, उनको उनपे वो जो है उनको समझाने के लिए कि जो है हम इंडियंस हैं, हमें फ्रीडम चाहिए, और वी
are all equal, we have unity, जो हम में है वो एकजुटता है. So like all these like concept of like unity in diversity. Okay, students. So I hope this thing clear now. Very good. So like we have to move further. So now students like we have to list before British who ruled over the India. जैसे हमने देखा ब्रिटिश ने रूल किया था हमारे वहाँ. इसके अलावा जो हमारे देश में वो कौन कौन से रूल कर चुके हैं. Like जैसे we can say that the Turkish, Mongol. Okay, so like Turkish, Mongol. So like all these foreigners also ruled over the India. Okay, before British. ठीक है. इसके बाद तो हमने देखा कि जो मुस्लिम भी आया है, इसका फिर इसके बाद ब्रिटिश आया है. तो like all these things. Okay, student, very good student. So now, so this is one question for you. Who coined the phrase unity in diversity to describe the country? So which one is correct answer? Yes, very good student. So correct answer is like Pandit Jawaharlal Nehru coined the phrase of unity in diversity. Okay, student, very good. So now recapitulation. So student, like we can say we discuss in today class like unity in diversity, as well as the concept of Ladakh, concept of like Kerala. So all these concept of like diversity के बारे में basically पता. ठीक है. तो like अगर हम बात करें तो what do you understand by I have some question for you. So what do you understand by like unity and diversity? Like yes, unity and diversity. Yes, student. Like we can say that like the term unity in diversity refers to the state of like togetherness or like onness in the spite of like presence of immanent of like diversity. Very good student, very good. And अगर हम बात करें like value and new outlook to our society, तो जो diversity है वो कैसे value है new outlook देती है हमारी society के. Like with the help of diversity, it helps people to communicate and learn from each other. We can say that, and we can also say that like people of like diverse races, ethnic origins, belief as well as social groups. So इसी इन सब mindsetों से जो है हमारा value, जो हमारे values हैं, new outlook जो हमारी society को मिल रहा है. So students like हमारा जो national anthem को compose किसने किया था? Yes, student. Who composed? Who person composed by national anthem of India? Yes, very good. Rabindranath Tagore, very good student. Now, like student, you have to like define inequality. So yes, student. So like you can say that like difference between group like in society because one has more money, advantage, etc. than the other. कि एक दूसरे एक के पास ज्यादा है, एक के पास कम है. ये inequality को show कर रहा है. Very good student, very good. So now. This is homework for you, student. So like you have to read this homework. First question is like Indian diversity has always been recognized as a source of its strength. How come with some points in the class? Okay, student. And then second question is like draw an Indian national flag and give the significance of color and chakra. So you have to like solve this these two questions, and this is all about from my side. So students, like thank you so much